ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा और इस रेसिपी का नाम है खाना तो ये खाएगी नहीं पर हमेशा ऐसे बैठी रहेगी। ऐसा लगता है कि इसको खाना मैं देती नहीं हूँ, पर अगर मैं के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ, बट जो ये बॉयल वाली मैगी होती है ना, वो बेस्ट होती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great, and if you are new to my channel then hi, my name is Yeshodhara. I make videos regarding beauty, skincare and sometimes I do vlogging. So in this video I am going to do a fun challenge. well, मुझे बहुत दिनों से एक फन चैलेंज करना था अपने इस चैनल पे, और फन चैलेंज रिगार्डिंग फूड इज़ ऑल ओवर द यूट्यूब. सो मैंने आज डिसाइड किया है कि मुझे एक करना है फन चैलेंज. तो आज मैं करने वाली हूँ आई ईट मैगी फॉर 24 आवर्स. वेल पर्सनली मैगी मुझे बहुत पसंद है, पर फुल डे के लिए मैगी इट्स लाइक You serious? सो लेट्स सी क्या होता है. सो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेटेस्ट वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं आ चुकी हूँ अपनी मैगी वाले पैकेट के साथ. 10 रुपए वाली मैगी जो 2 मिनट्स में तैयार हो जाती है, जो लिखा होता है, जो कभी भी 2 मिनट्स में नहीं होती है, सबको पता है. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल बस सुबह मुझे इतना ज़्यादा तड़कता भरकता नहीं खाना है. मुझे लाइट मैगी खाना है. पर मुझे सुबह सुबह थी कि बहुत ज़्यादा आदत है, बट क्या करें, आज मैगी चैलेंज है, सिर्फ मैगी खाना है. तो देखते हैं. इसको आना ही होगा मेरे ऑल टाइम वीडियोस में. अच्छा, एंजेला वाले में भी आई थी. A few moments later. तो गाइस, ये रही मेरी मैगी सुबह वाली. मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, सिर्फ बॉईल किया है और इसमें बीन्स दिए हैं और अनियन. बस सुबह इस मैगी के साथ इस ठंड के मौसम में एक कप चाय मिल जाती तो क्या बात थी. बट कोई नहीं, इसी से काम चला लेते हैं. गरम गरम. आप मैगी का जो भी बना लो, मैगी के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर लो, बट जो ये बॉयल वाली मैगी होती है ना, वो बेस्ट होती है. मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल ओके, सो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम. 3 hours later. तो मैं वापस आ चुकी हूँ और अभी बनाने वाली हूँ मैं लंच, बिकॉज हो गया है लंच का टाइम. और लंच में मैं कुछ डिफरेंट सा बनाने वाली हूँ विथ मैगी. सो देखते रहिए वीडियो को.
मेरा व्हाइट सॉस मैगी इज रेडी। जस्ट लुक एट द मैगी। कैसा लगा? वेल, व्हाइट सॉस पास्ता के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं। बट व्हाइट सॉस मैगी मैं अभी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। सो देखते हैं कैसा बना है। गरम है यार, फिर से मुंह जल जाएगा सुबह की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। $2,000 years later. Oh my god, it tastes so yummy. Oh my God! Wow! मैंने रेसिपी तो शेयर की है, तो आप सब ज़रूर ट्राई करना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फुल व्हाइट सॉस पास्ता की तरह ही बना है जो रेस्टोरेंट में मिलता है। और जस्ट इसमें मैंने पास्ता की जगह पे मैगी डाल दिया है। एंड इट टेस्ट लाइक, oh my god. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट मील पे। सो मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ एक मज़ेदार सा स्नैक्स रेसिपी लेके। सो आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा। और इस रेसिपी का नाम है इस रेसिपी का नाम है मैगी का कुरमुरे। सो लेट्स सी। It's yummy guys. तुझे खाना है? बोलना कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है मेरी मसाला अंडा वाली मैगी।
आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और दिस इज़ द लास्ट मील ऑफ माई डे। और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं खाना बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत सारी मैगी खा ली है और अभी मुझे बिल्कुल भी मैगी खाने का कोई भी मन नहीं है। पर चैलेंज है, चैलेंज को पूरा करना है, सो आई हैव टू ईट दिस वन। सो लेट मी टेस्ट। A few moments later. वाओ गाइस, बहुत अच्छा बना है और अंडा का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं इसको फिनिश करती हूँ। शायद मैं इसको फिनिश पूरा ना कर पाऊँ और इसी के साथ मेरा चैलेंज ख़त्म होता है। और ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था, पता नहीं कैसा हुआ है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग को पता है क्या करना है, एक बड़ा सा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आप चाहे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा एंड टेक केयर।